Today we are discussing about influenza vaccination. Uh, Self-defense isn't just a right; it is a necessity. डॉक्टर राहुल बताओ ये क्यों लिखा है? वैक्सीनेशन में सेल्फ डिफेंस कहाँ से आ रहा है? मीन्स हम किसी भी बॉडी को वैक्सीनेट करते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो उसका रिस्पॉन्स हमें कैसे मिलता है? सेल्फ डिफेंस, है ना? तो अबाउट इन्फ्लुएंजा वायरस इन्फेक्शंस आर सब्सटेंशियली कंट्रीब्यूटेड टू respiratory morbidity and mortality. In terms of high incidence of attack rate, high transmission risk, high complications, productivity loss, and risk of mortality. See this 1918 to 1909 Spanish flu, 1957 to 1958 Asian flu, 1968 Hong Kong flu, and 2019 pandemic of swine flu. Now come to symptoms of flu. This is important. If you have more than 4 or more symptoms, you have to concern and have to go to hospital. If fever greater than 100 degree Fahrenheit, headache, body ache, chills, sore throat, dry cough, running nose, extreme fatigue, and diarrhea, vomiting. Now come to high risk groups of influenza. First is pediatric age group, age between 6 and 33 months. People with chronic medical conditions like heart disease, lung disease, lifestyle disease, and pregnant women. People above more than 65 years of age, and healthcare workers. Then what is solution? Solution is vaccination. Easy to healthy aging after vaccination. Vaccinate, reduce burden on healthcare systems, significant returns on investments, and foster healthy aging. So this is CDC recommendation. See, heart disease, influenza vaccination, type 1, type 2 diabetes, influenza vaccination, lung disease, influenza vaccination, and HIV infections, influenza vaccination, and immunocompromised patient, influenza vaccination in CDC recommendation. Now come to role of influenza vaccination. हमारे पास किस को शुगर, डायबिटीज, हाइपरटेंशन? डॉक्टर साहब आपको है डायबिटीज? यस। आपने इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन ली है? कब ली है? नहीं। देखो, इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन हर साल लेनी है। अब मैं बताऊंगा हर साल क्यों लेनी है। ठीक है, आप देखो हेल्थ केयर वर्कर्स भी हो, डायबिटिक भी हो, है ना? कोविड वैक्सीन तो सबने ली थी, दैट्स डिफरेंट, ये डिफरेंट है ना? उसके बाद दिस इज क्वाड्रेंट वैक्सीनेशन मींस फॉर strain H1N1, H3N2, B Austria and Yamagata lineage. WHO क्या करता है? दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, सदर्न हेमिस्फीयर, महादेवा 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 महादेवा। इन्फ्लुएंजा सीजन कब होता है इंडिया में? अक्टूबर टू फेब। और साल में WHO देखता है कि कौन सा स्ट्रेन प्रिवेलेंट है, उस हिसाब से हर साल नई वैक्सीनेशन आती है और हर साल नई वैक्सीनेशन लगाना जरूरी है ना? यही कि मैंने एक बार लगा लिया
आपने अगर एक बार लगा लिया ठीक है, सेकंड टाइम हो सकता है स्ट्रेन चेंज हो जाए। स्ट्रेन चेंज क्या होता है इन्फ्लुएंजा का? एंटीजेनिक ड्रिफ्ट एंड एंटीजेनिक शिफ्ट। तो ये 2025 के स्ट्रेन्स हैं। H1N1 में बी विक्टोरिया, H3N2 में AN प्रोसिया, बी ऑस्ट्रिया और यामागाटा। सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर तो इंडिया। So, quadrivalent vaccine, it covers swine flu, H3N2 and B strains. Almost more than 8-fold increase in HA1 titers. HA1 heme aggregation inhibition titers. Post vaccination means it increase the immunity towards influenza after vaccination. ये भी कल की है, आज गुरु पूर्णिमा है, तो आई थॉट ये पिक डिनोट्स टुवर्ड्स आवर गुरु। So when should children get a flu vaccination? 6 months up to 35 months, 0.5 ml, 1 to 2 doses in a gap of 4 weeks intramuscular, and above 6 years 0.5 ml, 1 dose every year. Why every year? डॉक्टर राहुल बताओ, why every year? हर साल क्यों लगानी है? Because इन्फ्लुएंजा में क्या है? एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, एंटीजेनिक शिफ्ट, कंटिन्यूस स्ट्रेन चेंज होते रहते हैं। उसके लिए WHO क्या करता है? हर साल देखता है कौन सी कंट्री में कौन सा स्ट्रेन प्रेवलेंट है। दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया कम्स इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो हर साल जो भी स्ट्रेन प्रेवलेंट होगा उसके लिए वैक्सीनेशन बनाई जाएगी बिफोर सीजन ऑफ इन्फ्लुएंजा। और आपको जब भी सीजन होगा इन्फ्लुएंजा का उसके 2 हफ्ते पहले, बिफोर 2 वीक्स यू हैव टू बी वैक्सीनेटेड। और इंडिया में जो सीजन है वो अक्टूबर टू फेब। This is recommendation of pediatric age group between 6 months to 5 years of age. Now go to pregnancy and flu. So at greater risk of severe flu passing it to their unborn baby. Pregnant women have 18-fold higher risk of getting hospitalized due to influenza as compared to non-pregnant women. So complication of influenza in pregnancy leads to preterm birth, cesarean delivery, fetal distress, low mean birth weight, infants smaller for gestational age. Now come to benefits and necessity. Efficacy of vaccine in pregnancy is 70%. Influenza administration during last trimester gives maximum protection to the newborn. Almost 30 to 61% efficacy in infants under 6 months of age. When you give vaccine in third trimester of pregnancy after 7 months, then newborn under 6 months of age got 28 to 61% of efficacy. Now, when should every pregnant woman get a flu vaccination? In the third trimester of pregnancy. So it also reduces the risk of severity to the infection, also provide adequate antibody which can be transferred to the fetus to give adequate protection. Now come to role of influenza vaccination in lung disease, diabetes, cardiology. People with heart disease, diabetes and number of other chronic health conditions are at higher risk of developing serious flu complications. In fact, 9 out of 10 people hospitalized with flu had at least one underlying health condition. So, did you get influenza vaccination? Me? हाँ. आपने मुझे कल ही तो बताया था कि आपकी लोबेक्टमी हो चुकी है।
करवाता हूँ सर, आपके पास ही आता हूँ। हाँ. Now come to heart disease. Almost having heart attack was 6 times higher within week of a confirmed flu infections. And in 2020 study, more than 18,000 adults hospitalized with flu or with flu season found a sudden serious heart complications in 1 out of every 8%, almost 12% higher number. So, American Heart Association and American College of Cardiology also recommends. Now come to flu and people with diabetes. People with diabetes, even when well managed, are higher risk of developing serious flu complications in terms of pneumonia, bronchitis, sinus infections, and ear infections. During influenza epidemic was 5 to 50% rise in mortality among the diabetic patients. So 3 times higher risk of death and 6 times increased risk of hospitalization. Now come to flu and people with chronic kidney disease, which can make immune system less able to fight infections, and people with CKD, kidney transplant, and who are undergoing dialysis treatment, all are increased risk of severe illness from flu. Now to people above 65 years and other, between 70 to 85% of seasonal flu-related deaths have occurred in people above 65 years of age. This is deaths in India due to seasonal flu. 2002 and 2011, almost 70 deaths per 1 lakh people since last decade. These factors affecting global deaths from influenza. Now come to role vaccine in these patients. Sir, all the patients of CKD are to get influenza vaccine, or whether it is all depend on the stage of CKD, like CKD 1 This means influenza vaccination in CKD and dialysis patient. Okay, the patient who are on dialysis. Yes. And patient, CKD patient also not on dialysis. Doesn't mean patient having CKD is on dialysis. Yeah, it is basically CKD 5 and still. Yes. So all CKD chronic disease patient needs to be vaccinated. Now, come to influenza vaccination reduce children risk of influenza-related pediatric intensive care unit admission by 74%. And in pregnancy reduce acute respiratory illness by 1/2, means 50%. Influenza in asthma patient. So almost 50% of senior age more than 65 years and older who have exiting chronic condition like diabetes, heart disease, lung disease, increased risk of influenza infection and complication. So almost 36% overall vaccine effectiveness in individuals having all the disease more than 65 years. 21% without any higher risk medical conditions. 35% vaccine effectiveness in patients with high risk of medical conditions. And about age 65 to 79 years, 39% vaccine effectiveness. So this is quaternary valent vaccines. Influenza vaccine of 3 types: inactivated, live activated, and recombinant. Best is inactivated quadrivalent vaccine. Also protect from Mahadeva, 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 Mahadeva. Please don't give intravenous, subcutaneous. It's only intramuscular. Now
come to doses, 6 months through 35 months, 1 or 2 doses, 0.5 ml. And if 2 doses administered at least 4 weeks apart. It depends on per advisory committee on immunization practice annual recommendation. 36 months through 8 years, 1 or 2 doses, 0.5 ml. More than 9 years, only 1 dose, 0.5 ml per year annually. तो याद कैसे रखोगे annually? कोई बता सकता है? बर्थडे के बर्थडे लगवाएं। क्या करें? अपने बर्थडे के बर्थडे पे लगवा लो। हाँ, ये सही है। लेकिन मैं अगर बर्थडे अक्टूबर से पहले वजह से मेरा अप्रैल में आता है, इंडिया में तो सीजन जो फ्लू है वो अक्टूबर से है। हाँ। Yes, ma'am. Almost 2 weeks apart. मैम एक्चुअली इसका मैम WHO साल में 2 बार वैक्सीन बनाता है मैम ये एज वो देखता है कि कौन सा स्ट्रेन प्रेवलेंट है, जैसे मैंने बताया सदर्न हेमिस्फीयर और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर्स। अब मान लो वो बनाएगा ऑलमोस्ट 2 to 3 months बिफोर यस सीजन। अभी अक्टूबर में होगा तो जून या जुलाई में वैक्सीन बनेगी और वो हमारे पास सितंबर में आएगी। यस, एफिकेसी डिक्रीज होगी, ऑलमोस्ट 28% डिक्रीज हो जाएगी मैम। दैट्स व्हाई ये 2000 जो मैंने शो किया था वो 2025 के स्ट्रेन थे, यामागाटा, क्रोशिया, ये सब। हाँ, तो मैम कह रहे थे, लेकिन मैं मानता हूँ कि घर में ना कुछ लोग ऐसे होते हैं फालतू जिनको कुछ काम नहीं होता, उनको बता दो भैया मैंने वैक्सीन लगाई है, अगले साल बताते हैं फालतू लोगों को। हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैंने ये क्यों पूछा, आप हमें ही देख लो, जैसे डॉक्टर साहब इतने सालों से इन्होंने इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाई, और ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ, ऑलमोस्ट 50% रिस्क डिक्रीज हो जाते हैं आफ्टर इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन। ये स्टेज देखिए, है ना, ये है 2025 के। हर साल स्टेज चेंज होते हैं बिकॉज ऑफ कंट्रीज एंड ड्रिफ्ट। यस मैम, हाँ, और बिफोर 6 मंथ आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में लगवानी चाहिए, उसका बेनिफिट आपको न्यूबॉर्न्स में मिलेगा। ऑलमोस्ट एफिकेसी 28 to 61%। Contraindication only one severe allergic reaction, including any protein or previous dose of any influenza vaccine, is contraindication to administration of these vaccines. Warning and precautions, Guillain-Barré syndrome। कोविड में भी ये हुआ था कि कोरोना वायरस से जीबी सिंड्रोम हुआ था वैक्सीनेशन से। So if GBS has occurred within 6 weeks of previous influenza vaccination, the decision to be given should be based on clinician. GB syndrome doesn't mean it is absolute contraindication. It's only related contraindication. However, anaphylaxis or allergy is absolute contraindication to this vaccine. It's all about preventing managing allergic reaction. No data availability on the administration of this vaccine with other vaccines not available. No drug interactions has been found. हाँ, so हम चेक कर कैसे करेंगे? किसी ने कोई पेशेंट ऐसे होते हैं जो मेरे पास आते हैं, सर मेरे को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन आपने लगवाई थी लेकिन मेरे को फिर भी इन्फ्लुएंजा हो गया, होता है ना, और इतनी महंगी मेडिसिन है ये, ऑलमोस्ट 1700 की, और हर साल आप लगवा देते हो। फौज में तो फ्री आती थी, यहाँ तो पैसे देने पड़ते हैं, तो इसका क्या जवाब दोगे? इसमें डिपेंड्स ऑन HA1 टाइटर। मीन्स आपको जब भी वैक्सीन लगवाई है उसके बाद अगर आपके HA1 टाइटर
more than 1:40 इंक्रीज होता है, मीन्स जीरो प्रोटेक्शन, इट मीन्स कि आपको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। एक होता है जीरो कन्वर्जन। जीरो कन्वर्जन मीन्स आपको प्रोटेक्शन तो मिल रही है लेकिन आपके टाइटर इतने इंक्रीज नहीं हो रहे हैं आफ्टर वैक्सीनेशन। हाँ, लेकिन आपकी जो सीवियरिटी है वो आफ्टर वैक्सीनेशन डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स आपको हॉस्पिटलाइज होना था तो आप हॉस्पिटलाइज नहीं होगे, 3-4 डेज का फीवर कब आएगा और ठीक हो जाओगे। ये मैं अपने पेशेंट को बताता हूं। हाँ, सिंगल डोज प्रीफिल सीरीज 0.5 ml पैकेज ऑफ 5, स्टोरेज ऑलमोस्ट 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, डोंट फ्रीज। सीरीज में आता है ये 0.5 ml और इंट्रामस्कुलर इस टाइप का आएगा है ना। और मैंने तो अभी तक आज तक इससे कोई एनाफाइलैक्सिस देखा नहीं है। Yes, life has its ups and downs, we call them spreads. In case अगर आपको कुछ इन्फ्लुएंजा रिपीटेडली होता है, आपको मोर्बिडिटीज हैं, तो वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए आपको। थैंक यू। आई होप ज़्यादा टाइम नहीं लिया मैंने। एनी क्वेश्चन? ये हेल्थ केयर वर्कर्स में कुछ स्पेशल रिकमेंडेशन है? हाईली रिकमेंडेशन सर। ऑल द हेल्थ केयर वर्कर्स? यस यस रिस्पेक्ट ऑफ एज, कोमॉर्बिडिटीज? सर आप लेट आए, मैंने इनिशियली बताया था। हाँ, पीडियाट्रिक ग्रुप, प्रेगनेंसी और पेशेंट हैविंग COPD, डायबिटीज़ एंड हेल्थ केयर वर्कर्स, CDC रिकमेंडेशन है, हाईली रिकमेंडेशन फॉर इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। Irrespective of age? Yes. Irrespective of prior COVID vaccination? Almost 4 weeks apart. It also gives protection in to coronavirus. Because if we had a prior COVID vaccination, then till what time we can avoid influenza vaccine? Or till after what amount of time we would require to get revaccinated? Influenza vaccine yearly, 4 weeks apart. Yes, influenza vaccine yearly. क्या? हाँ सर, ये देखो ना, मैंने सभी वैक्सीन मंगवाई है, रखी है। सर लाएंगे सबके लिए वैक्सीन। हाँ सर लगाएंगे सबको। एक्चुअली ना ईयरली ही लगेगी ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन ना। हाँ, ऑलमोस्ट 2 weeks बिफोर सीजन ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो हमारे यहाँ अक्टूबर से स्टार्ट होता है, अक्टूबर टू फेब, तो आप फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में लगवाइए। डॉक्टर आदर्श को जरूरत नहीं लगवाने की, अभी जिम जाने लगे मेरे साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। कितना टाइम लगा है? 24 मिनट 40